जय जगन्नाथ फ्रेंड्स। आज वीडियो रे आमे अक्टोबर मासर करंट अफेयर क्वेश्चन कवर करिछु जोठी आपन को सबतक क्वेश्चन देखा मिलिबो। इंटरनेशनल करंट अफेयर्स, नेशनल करंट अफेयर्स, स्पोर्ट्स, साइंस, टेक्नोलॉजी, अपॉइंटमेंट रिजिग्नेशन, इंपोर्टेंट डेट्स, समिट एंड कॉन्फ्रेंस, अवार्ड रिकॉग्निशन, रैंक्स एंड रिपोर्ट्स, बुक्स एंड ऑथर्स, बैंकिंग एंड इकोनॉमी, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट स्कीम एंड कमिटी और डिफेंस एग्रीमेंट एमओयू और मिसलेनियस सब तक क्वेश्चन देखा मिल आपको। से देखो आपंकर ये वीडियोटा आपको सियोर हेल्प कर पाखापाखि 250 रु 300 क्वेश्चन दि जाए क्लियर। आउ टे आम स्पीड फायर करवा शीघ्र जावा कहीं बहुत सारा क्वेश्चन अच्छी। प्रथम क्वेश्चन देछि पोलैंड हैज चोजन यूएस फार्म वेस्टिंग हाउस टू बिल्ड इट फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ पोलैंड माने क्वेश्चन पचारछि पोलैंड रो कैपिटल ना कोन पचारछि सेटा होछि वार्सा। ओके वार्सा होछि पोलैंड रो कैपिटल। पोलैंड हैज चोजन अमेरिकन फार्म वेस्टिंग हाउस टू बिल्ड इट फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट माने तार जो प्रथम न्यूक्लियर पावर प्लांट तैयारी करिया पई अमेरिकन फार्म वेस्टिंग हाउस को चूज करछि कि पोलैंड। क्वेश्चन देछि लुइज इनिकियो लुला डा सिल्वा हैज बीन इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। ए होछि ब्राजील रो मन रखन ताको ना होछि लुइज इनासियो लुला डा सिल्वा ब्राजील। ओके आउ लुइज इनासियो लुला डा सिल्वा हैज रिसीव 50.83% ऑफ द वोट। ये 50.83% वोट पाइथिले। आउ ताकर जो जयर बसलानरु जो 49.17% पाइथिले। The United Nations, Ukraine and which country on October 31, 2022 agreed to implement two Black Sea grain deals despite Russia withdrawing from the agreement? Question कौन बचला? The United Nations, Ukraine and which country on October 31, 2022 agreed to implement the Black Sea grain deal? Black Sea grain deal. इटा कि इटा तुर्की मिसी जेथिरे मन रखंतु यूक्रेन यूनाइटेड नेशन आउ तुर्की मिसिची। नेक्स्ट क्वेश्चन पचारिछि द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हैज फर्स्ट टाइम रिलीज द लिस्ट ऑफ फंगल प्योरिटी पैथोजेंस FPPL व्हिच इंक्लूड हाउ मेनी फंगी दैट कैन बी हेल्थ हैजर्ड। माने जो WHO जो छै कोन करछि कहले गोटे फर्स्ट टाइम पे गोटे फंगल प्योरिटी पैथोजेंस लिस्ट जारी करछि जो थेरे माने केतेटा फंगी जे की कोन करछंती हेल्थ हैजर्ड तयारी करछंती से होछंती ऑनेस्टा म रखंतु। Who has been elected the new president of Brazil? Brazil नो प्रेसिडेंट के से होचे लुइज इनासियो लुला डा सिल्वा और रखंतु। Which of the following countries assumed the championship of UNSC on 1 November 2022? आंसर होची घाना और रखंतु। आउ जो UNSC ना यार जो घाना एज्यूम करियो वर्ष घाना ही तारो माने चेयरमैनशिप नेबो। नेक्स्ट क्वेश्चन देछि which country has launched demining training project in Ukraine? Which country has launched a demining training project in Ukraine? Say which USA, United States of America. In the midst of the Russia-Ukraine war, the United States has launched a demining training project in Ukraine. The project has been launched to provide immediate humanitarian assistance to Ukraine in the event of brutal invasion by Russia. Okay, we have help karibo Ukraine ko. Sheikh Sultan Al Qasimi, ruler of Sharjah city of United Arab Emirates, inaugurated 41st Sharjah International Book Fair on 1st November 2022. Which country the guest of honor at the book fair? क्वेश्चन पचारिछि ए जो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स रे 41तम शारजा इंटरनेशनल बुक फेयर हितिला जे 1st नवंबर दिन हितिला आ उसर गेस्ट कंट्री के थिला से थिला इटली म रखंतु। What word has been elected the Collins Dictionary Word of the Year 2022? Collins Dictionary of the Word of Year सेटा होछि हम कहूचो परमाक्रिसिस। ओके परमाक्रिसिस को जाउछि और परमाक्रिसिस has been voted Collins Dictionary Word of the Year. यार मीनिंग होछि extended periods of instability and insecurity. Who has been elected the Prime Minister of Israel? Israel नो के से होचंदी बेंजामिन नेतान्याहू। ठीक अछि बेंजामिन नेतान्याहू। Benjamin Netanyahu has been elected the Prime Minister of Israel. Former Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu has made a surprise return to power. से पुणी आउथरे पावर को रिटर्न करिसंती। Which city is hosting the World Travel Market from 7th November to 9th November? क्वेश्चन कोन पचला which city is hosting the World Travel Market from 7 November to 9 November? ये होछि लंदन।
Next question पचारिछि Pakistan Finance Minister Ishaq Dar recently announced that Pakistan will implement the interest-free banking system by the year next. Question पचारिछि जो पाकिस्तान फाइनेंस मिनिस्टर छथि ना इसाक धर से रिसेंटली अनाउंस करछथि जे पाकिस्तान इम्प्लीमेंट करिवो इंटरेस्ट फ्री बैंकिंग सिस्टम जे 2027 मसरे से इम्प्लीमेंट करिवो बोली से घोषणा करिसथि. The Association of Southeast Asian Nations has agreed in principle to accept whom as the 11th member of the grouping. The Association of Southeast Asian Nations ASEAN जो कहूँ has agreed in principle to accept whom of the 11th member of the grouping से होची ईस्ट टिमोर. ठीक है ईस्ट टिमोर को एशियार नुआ ग्रुप रे ऐड करा जाय बोली से घोषणा करिसथि. आउ ईस्ट टिमोर गोटे होची लाटेस्ट कंट्री जोटा कि साउथ ईस्ट एशिया रो टू गेट इंडिपेंडेंस फ्रॉम इंडोनेशिया इन 2002 मसरे से कोन हेतिला माने ए जो इंडोनेशिया रो अलगा हेतिला. ठीक अछि. आउ एशियन स्टार्टेड 5 member bloc in 1967 and gradually expanded. Cambodia being the latest country to join recently 1999 1999 मसरे कंबोडिया मध्ये जग देथिला आ 1967 मसरे तयारी करा जेथिला एटा. Which country has been removed by the United States from its currency monitoring list? Question: which country has been removed by the United States from its currency monitoring list? एटा होची इंडिया. The United States Treasury Department has removed India from its currency monitoring list. India has been on this list for the last 2 years. Along with India, the US has removed Mexico, Italy, Vietnam and Thailand from this list. ए जो यूनाइटेड स्टेट जो अछि ना करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट रो ताको माने इंडिया को हटे दै छै मन रखंतु. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन पछा हु हैज बीन इलेक्टेड द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ स्लोवेनिया. स्लोवेनिया रो प्रथम प्रेसिडेंट के ता नाम होछि नताशा प्रिग मुसार. नताशा प्रिग मुसार होचंदी स्लोवेनिया रो प्रथम वुमेन प्रेसिडेंट. क्वेश्चन पढि पारे परीक्षा रे. Which group has launched 1.4 billion fund to tackle the next global pandemic? It is G20. मन रखंतु which group has launched 1.4 billion fund to tackle next global pandemic. जदि कोनोसी भविष्य रे ग्लोबल पैंडेमिक आसीबो ताले ए जो G20 कोन करछि 1.4 billion fund जारी माने निजे पाखा रखि G20 health and finance minister launch 1.4 billion fund to tackle next global pandemic. Okay, our G20 country have agreed to create a pandemic fund to prevent and prepare for next pandemic. जदि कोन G20 जो माने कंट्री अछंती से माने मेनली एथरे भाग नै छंती और से माने 1.4 बिलियन रो फंड रखि छथि पाखरे जदि कोनसी पैंडेमिक आसे से खर्च होबो. द फंड हैज बीन मेजरली कंट्रीब्यूटेड बाय द यूके, यूनाइटेड स्टेट, इंडिया, चाइना, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा एंड जापान समस्त मिसी के दै छंती. Which country has launched first edition of Global Media Congress GMC, a platform to promote business connection and innovation in the media sector in November 2022? क्वेश्चन पछरी को देश जे कि जारी करछि गोटे ग्लोबल मीडिया कांग्रेस फर्स्ट एडिशन प्लेटफॉर्म जारी प्रमोट करछि रे प्रमोट करिया पई कोन बिजनेस कनेक्शन आ इनोवेशन को प्रमोशन करिया पई मीडिया सेक्टर रे ए जो ग्लोबल मीडिया कांग्रेस लॉन्च करि सेटा होछि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स. क्वेश्चन देखिए which country launched the Haoshang 17 monster missile. Haoshang 17 और monster missile भी कहा जाउछ नॉर्थ कोरिया मन रखनु. Haoshang 17 और monster missile. India has acquired the chairmanship of global partnership on artificial intelligence from which country? देखो ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो तार चेयरमैनशिप किए कर करछि इंडिया फ्रांस मन रखनु. इंडिया हैज acquired the chairmanship global partnership on artificial intelligence from which country? France ro. India took over the chairmanship of global partnership on artificial intelligence GPAI from France on November 21 2022. Okay, after resuming the G20 presidency it another body that will be chaired by India जोटा कि G20 परे परे ए जो रहला जो GPAI याको मध्य इंडिया चेयरमैनशिप करिवो. This next question, Cambridge Dictionary has declared which word as the word of the year for 2022? सेटा होछि कोन ता नाम जे होमर गोटे वर्ड जोटा कि कैम्ब्रिज डिक्शनरी डिक्लेयर करिछि एटा होछि वर्ड ऑफ द ईयर 2022. ओके, आउ होमर रिफर टू द होम रन इन द पॉपुलर अमेरिकन स्पोर्ट्स बेसबॉल. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देछि हु अमंग द फॉलोइंग हैज प्रिपेयर्ड द फर्स्ट साइंटिफिक मैप ऑफ द अटलांटिक ओशियन फ्लोर. तर मेरी थार्फ जे कि प्रथम थर पई साइंटिफिक मैप तयारी करछन्ती अटलांटिक ओशियन फ्लोर रो. Which country parliament has passed a free trade agreement with India? फ्री ट्रेड करबा
फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करिछि इंडिया सहित से होछि ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर Anthony Albanese announced that the country free trade agreement with India has been passed through its parliament. Who has been elected the president of Kazakhstan? Kazakhstan ର ନୂଆ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କିଏ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି କାସିମ ଜୋମାର୍ଟ ଟୋକାୟେଭ। Sarang, the Indian film festival was organized by Indian embassy in which country? याको हम कहूछु सारंग कहि परिबा एटा साउथ कोरिया रे याको लॉन्च करा जायछि इंडियन एम्बेसी द्वारा। हु हैज बीन शोन एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ मलेशिया? मलेशिया रो जो नुवा प्राइम मिनिस्टर के से होचंती अनवर इब्राहिम ओके। अनवर इब्राहिम हैज द बिकम द 10th प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री Next Prime Minister Sher Bahadur Deuba has been elected from the home district of Deldhura for 7th consecutive time. ये नेपाल रो है ना मोर रखंतु नेपाल प्राइम मिनिस्टर शेर बहादुर देवा ओके ये होची नेपाल रो मोर रखंतु। Who has been appointed the new chief army staff COS in Pakistan on November 24? Chief army staff से होचंती आसिम मुनीर से होचंती chief of army staff Pakistan. Which country has partnered with China for 27-year natural gas supply deal? ये होची कतर मोर रखंतु। Which country has partnered with China for 27-year natural gas supply deal? एटा Qatar has announced to 27-year natural gas supply deal with China. This is the longest gas deal ever signed जोटा कि 37 वर्ष पर्यंत माने कोन करिवो गैस सप्लाई करिवो। तापर नेशनल करंट अफेयर को आसीबा आमे which of the following state government will form a committee for implementation of union civil code in the state? ओके भलो क्वेश्चन पचारि छी। को राज्य सरकार जे कि गुडे कमिटी माने कमिटी इंप्लीमेंटेशन करिवो यूनिफॉर्म सिविल कोड इन द स्टेट एटा होची गुजरात। Minister of the State of Home Sars Sangvi said that the state cabinet approved its proposal in its meeting held in October 29 to 22. Next question पचार the Union Ministry of Water Resources is organizing the 7th edition of India Water Week from 1st to 5th November 2022. Who has inaugurated this event? Question पचार जो United Ministry of Water Resources अच्छंती से गोटे 7th edition Water Week पालन करिसंती जेटा कि 1 नवंबर रु 5 नवंबर रहितला आ याको इनाउगुरेट के करथिले आंसर द्रौपदी मुर्मू ओके। पीएम मोदी रिसेंटली अटेंड द प्राइड स्टोरी ऑफ मनगढ़ धाम प्रोग्राम इन बंसला डिस्ट्रिक्ट ऑफ डेक्स। ए जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अछंती से रिसेंटली अटेंड करथिले प्राइड स्टोरी ऑफ मनगढ़ धाम प्रोग्राम आ जेटा कि बंसला डिस्ट्रिक्ट रहितला एरा को जगह रहितला राजस्थान रे ठीक अछि। पीएम मोदी अटेंड द मनगढ़ धाम की गौरव गाथा इवेंट इन बांसवाड़ा राजस्थान। ही पेड ट्रिब्यूट टू द ट्राइबल्स किल्ड बाय द ब्रिटिश इन मनगढ़ इन 1930 1913 मसरे जो मनगढ़ जो ट्राइबल को जो ब्रिटिश माने हत्या करते ताको ट्रिब्यूट रेडा करा जाय था। ही अटेंड द मनगढ़ धाम की गौरव कथा इवेंट अलोंग विथ राजस्थान सीएम अशोक गहलोत, गुजरात सीएम भूपेंद्र पटेल एंड मध्य प्रदेश सीएम शिवराज सिंह चौहान। The Ministry of Agriculture has restricted the use of decks citing health hazard to humans and animals. The Ministry of Agriculture has restricted the use of decks. एरा होची मेट्रिबुजिन ओके मेट्रिबुजिन को यूज करा जाय परिबो नै। Recently a new species of dam shellfly has been discovered from Brahmagiri hills of which of the following? ब्रह्मगिरी एटा होची वेस्टर्न घाट ईस्टर्न घाट कहउछु ईस्टर्न घाट ओके। आ एटा जे कि कहउछु रिसेंटली न्यू स्पीशीज ऑफ डेम्स फ्लाई हैज बीन डिस्कवर्ड फ्रॉम ब्रह्मगिरी हिल्स ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग? ईस्टर्न घाट रो एटा करा जायछि। व्हिच स्टेट हैज अनाउंस्ड चाइल्ड फ्रेंडली पुलिस स्टेशन? एटा होची ओडिशा चाइल्ड फ्रेंडली पुलिस स्टेशन। ओडिशा चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक हैज अनाउंस्ड 16 चाइल्ड फ्रेंडली पुलिस स्टेशन एंड adolescent help desks. The Chief Minister also announced that 18 more such police stations in the state would start functioning soon. Police station various districts of Odisha are with child friendly facilities. जोटा कि child friendly facility रहिबो। The Kerala government has announced to roll back its decision to increase the retirement age of employees of all PSU in the state of how many years? जो पब्लिक सर्विस रे काम करछंती तांकर 6 ईयर पर माने तांकर
काम करि परिबे The Kerala government has announced to roll back and its decision to raise the retirement age of employees for of all PSU in the state 60 years. The Union Cabinet has approved the renaming of Holangi Airport Itanagar H Dex. देखो यूनियन कौन करिछि यूनियन कैबिनेट जो अछि से कौन करिछि अप्रूव करिछि जो होलांगी एयरपोर्ट को जो होलांगी एयरपोर्ट इटानगर को चेंज करी कौन करा जिवो दोनी पोलो एयरपोर्ट करा जिवो दोनी पोलो एयरपोर्ट ओके द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश हैज पास्ड ए रेजोल्यूशन टू नेम द एयरपोर्ट एज दोनी पोलो एयरपोर्ट इटानगर नेक्स्ट क्वेश्चन पचारछि नॉर्थ ईस्ट फर्स्ट फिश म्यूजियम विल बी सेट अप इन व्हिच स्टेट एटा होछि अरुणाचल प्रदेश मन कोन प्रथम फिश म्यूजियम Which of the following company has received India first responsible steel certification? एटा होछि टाटा स्टील मन रखंतु ओ कंपनी जे रिसीव करछि इंडिया रो प्रथम रेस्पोंसिबल स्टील सर्टिफिकेशन एटा होछि टाटा स्टील रिसीव रेस्पोंसिबल स्टील सर्टिफिकेशन फॉर इट्स 3 प्रोडक्शन फैसिलिटी इन Jamshedpur. What is the name of the chatbot launched by the Unique Identification Authority of India UDI in November 2022 for better user experience? देखो ये जो UIDI जो अच्छी आधार वेबसाइट नेक्स्ट क्वेश्चन which state has introduced a lesson upon Fatima Sheikh India first female Muslim teacher? आंसर होची आंध्र प्रदेश मन कोन एटा भी गुडे भलो क्वेश्चन आंध्र प्रदेश India first floating financial literacy camp was held in which city? India first floating financial literacy camp एटा श्रीनगर रे लॉन्च करा जायछि the world first Vedic clock will be installed in which city of India? एटा होची उज्जैनी रे हला the world first Vedic clock will be installed in Jantar Mantar GY observatory in Ujjaini Madhya Pradesh on March 22 next year of Gudi Padwa new संवत्सर स्टार्ट एटा को मन को एटा होची वैदिक क्लॉक जता कि उज्जैनी रे याकू सेटअप करा इंस्टॉल करा जायछि रिसर्चर्स फ्रॉम व्हिच स्टेट हैव बीन डिस्कवर्ड ए न्यू स्पीशीज ऑफ बी एपिस कोरिनजोडियन आफ्टर मोर देन 20 इयर्स देखन तो गोटे जो रिसर्चर सब अछंती से कोन करछन गोटे न्यू बी स्पीशीज डिस्कवर करछंती ता ना होची एपिस कोरिनजोडियन ओके एटा होची मेनली केरल ले करा जायछि केरल रो माने जो रिसर्च सब अछंती वैज्ञानिक माने से माने एगो डिस्कवर करछंती ओके आउ नेक्स्ट क्वेश्चन पचारिछि हु ऑन 8 नवंबर 2022 अनवील्ड द लोगो थीम एंड वेबसाइट ऑफ इंडिया G20 प्रेसिडेंटी नरेंद्र मोदी जे की वेबसाइट थीम आउ लोगो अनवील करिथिले कहार G20 रो ओके G20 प्रेसिडेंसी रो नेक्स्ट क्वेश्चन पचारिछि मदर टंग सर्वे ऑफ इंडिया हैज बीन कंडक्टेड बाय व्हिच मिनिस्ट्री द मदर टंग सर्वे ऑफ इंडिया एटा मेनली करि थाय के मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स करि थाय ना मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स क्वेश्चन दिछि व्हिच टाइगर रिजर्व हैज रिसेंटली लॉन्च एलिफेंट एडॉप्शन प्रोग्राम एटा होछि अन्नामलाई टाइगर रिजर्व हला अन्नामलाई टाइगर रिजर्व जे कि रिसेंटली कोन करूछि जे कि गोटे माने एलिफेंट एडॉप्शन प्रोग्राम लॉन्च कर जाको अन्नामलाई टाइगर रिजर्व कह जाउछि The Annamale Tiger Reserve ATR has opened the doors of an elephant adoption program through which non-governmental organization, institution and trust individual can sponsor the expenses of forest department camp elephants. Next question, PM Modi inaugurated Terminal 2 of Kempagoda International Airport in which city on November 11? एटा होछि बेंगलुरु रे हला बेंगलुरु जेटा कि केम्पागोडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट टर्मिनल 2 इनागुरेट करिसंती के PM मोदी तमिलनाडु हैज नोटिफाइड व्हिच वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एट 17th वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तमिलनाडु गोटे कोन करछि कहले नुआ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नोटिफाई करिछि बा रेडी करिछि ता ना कोन ता ना होछि कावेरी साउथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ओके द सेंचुरी इनक्लूड्स रिजर्व फॉरेस्ट एरिया कृष्णनगरी इन धर्मपुरी डिस्ट्रिक्ट इट इज होम टू 35 species of mammals to 38 species of birds. India first hydrogen fuel cell catamaran vessel will built by Kochi Shepherd Index. तो आपण कहि परिबे इंडिया फर्स्ट हाइड्रोजन fuel cell एना होछि मेनली वाराणसी रे करा जायछि at which place is the 41st edition of India International Trade Fair IITF being held in November 2022 मेनली कोठी हितला एटा होछि न्यू दिल्ली रे हला 41तम एडिशन कहारो इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर IITF रो आ एटा नवंबर 27 पर चली थिला
ଆଉ ଏଠି ମେନଲି ଇନାଗୁରେଟ କରିଥିଲେ କିଏ ମିନିଷ୍ଟର ପୀयूष ଗୋयल। The seventh edition of Ambur Falcon Festival, Ambur Falcon Festival was celebrated in Tamengang district of Dex, Tamengolang। এটা হচ্ছে মণিপুর র जो अम्बुर फाल्कन फेस्टिवल हेतिला এটা হেতিলা মণিপুর রে হেতিলা হলা। How the festival is held spread awareness about the conservation of the Amur falcon. The Amur falcon is the world longest flying migratory bird। এটা ଗୋଟେ ସବୁଠୁ ପୃଥିବୀର longest flying migratory bird। Manipur Forest Authority celebrated Amur Falcon Festival at Tamenglong district headquarters। Which state has implemented the Panchayat extension in Scheduled Area Act? এটা হচ্ছে MP। The Madhya Pradesh government has enacted the Panchayat extension to Scheduled Area PSA Act in the state। Which is the chairperson of National Commission for Women NCW who launched the fourth phase of Digital Shakti Abhijan on 16th November 2022? Question पचारिछि who is the chairperson of the National Commission for Women? ये होचंती रेखा शर्मा। PM Narendra Modi inaugurated the Doni Polo Airport in which state? এটা হচ্ছে অরুণাচল প্রদেশ Doni Polo Airport। Which state government has selected 3 transgender teachers in government school? ये হচ্ছে কর্ণাটকা যে কি তিনটা ट्रांसजेंडर को सिलेक्ट करिछि टीचर पाई। कामेंग हाइड्रो पावर स्टेशन व्हिच हैज इनॉग्रेटेड रिसेंटली इज लोकेटेड इन व्हिच स्टेट? ए जो कामेंग हाइड्रो पावर स्टेशन अछि जाको रिसेंटली इनॉग्रेट करा जायछि को जगह अछि? एटा होछि अरुणाचल प्रदेश रे रहिछि अरुणाचल प्रदेश। प्राइम मिनिस्टर अरुणाचल नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड द 60 मेगावाट कामेंग हाइड्रो पावर स्टेशन इन अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन हु हैज बिकम द फर्स्ट वुमेन स्काई डाइवर ऑफ द इंडियन आर्मी? से होचंती लेंस नायक मंजू। ठीक अछि जे कि प्रथम वुमेन स्काई डाइवर ऑफ द इंडियन आर्मी। Which union minister launched 53 hour challenge 75 creative minds on 21 November 2022? Answer होछि अनुराग सिंह ठाकुर। Which union minister launched the 53 hour challenge for 75 creative minds? Union Minister of Information and Broadcasting and Youth Affairs and Sports Anurag Singh Thakur inaugurated the 53 hours challenge for 75 creative minds on November 21, 2022. Okay. Who has launched India first National Excellence Center for Green Port and Shipping? Who has launched India first National Excellence Center for Green Port and Shipping? এটা হচ্ছে आंसर হবে সর্বানন্দ সোনোয়াল। के সর্বানন্দ সোনোয়াল जी की लॉन्च करछन इंडिया ର प्रथम National Excellence Center for Green Port and Shipping। Who inaugurated the UNESCO India African Hackathon 2022 at Gautam Buddha University GBU campus in Greater Noida? निम्नलिखित मध्य किए इनॉग्रेट करिसंती यूनेस्को इंडिया अफ्रीका हैकाथन 2022 एट गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी से योगी आदित्यनाथ म रखंतु। अनामली टाइगर रिजर्व लॉन्च जुम्बो ट्रेल्स इन कोयम्बटूर। इट इज लोकेटेड इन व्हिच स्टेट ऑफ इंडिया? तो अनामली टाइगर रिजर्व लॉन्च करछि कोन जुम्बो ट्रेल्स कोयम्बटूर रे याको लॉन्च करिछि। एटा को राज्य रे अछि? एटा तमिलनाडु रे है ना। अनामली टाइगर रिजर्व जुम्बो ट्रेल तमिलनाडु। The Animal Tiger Reserve ATR has launched Jumbo Trails in Coimbatore, Tamil Nadu, with an aim to educate visitors to the Tiger Reserve about elephants, flora and fauna ATR tribal living in the hills। जो माने रहउछन्ती से हिल्स पाखरे एलिफेंट विषय रे किबा फ्लोरा विषय रे फाउना विषय समस्त को जे भी विजिटर आसी तांको एतरे माने किछि ना किछि शिक्षा दिया जिवो। एटा होय सेटा जुम्बो ट्रेल्स। Oritapati has been notified the first biodiversity heritage site of which state? Oritapati एटा होय तमिलनाडु रो मन रखंतो। Oritapati village in the Madurai district has been notified the first biodiversity heritage state in Tamil Nadu। It is a rich biological and historical significance with the presence of about 250 bird species। 250 bird species रहिसंती। याकु कहा जाउची गोटे first biodiversity heritage site in Tamil Nadu। Which is the first state to create the role of Director General of Audit? Tamil Nadu। Tamil Nadu is the first state in India to create the role of Director General of Audit। For this role, the state has appointed the officer from the Indian Audit and Account Service on the deputation। Sonjal 2022 is the annual youth festival held in which state union territory? এটা হচ্ছে সঞ্জাল 2022 এটা হইতলা জম্মু কাশ্মীর মনে রাখন্তু। India first night sky sanctuary is located in which state? এটা হচ্ছে লদাখ মনে রাখন্তু। ইন্ডিয়ার প্রথম নাইট স্কাই সেঞ্চুরি এটা হচ্ছে লদাখ।
Tamil Nadu has approved proposal to include 60 village in which district? এটা হচ্ছে চেঙ্গালপাটু, তারপরে কହୁଛ থিরু খুজু কুନ୍ଦ୍রম ଆଉ ତିରୁପୁର। ଓକେ, ଏସବୁ ଜାଗାରେ ମାନେ 60ଟା ଭିଲେଜ ମାନେ ନୂଆ ଭିଲେଜ ଇନକ୍ଲୁଡ କରାଯିବ ବୋଲି ସେ ପ୍ରପୋଜାଲ ଦେଇଛନ୍ତି। Which state has become the first state to get Jio 5G service? ये ହେଉଛି ଗୁଜରାଟ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, Jio announced on November 25, 2022 that it has launched its true 5G network at its headquarters in 33 districts of Gujarat, making its first state in India to achieve 100% coverage of 5G services across all states. Gujarat रे President Draupadi Murmu will be on a 2-day visit to his state from November 29, 2022 to participate in the International Gita Mahotsav 2022. गीता महोत्सव रे जोग देबा पई जाइथिले के जो प्रेसिडेंट अछन द्रौपदी मुर्मू हरियाणा जाइथिले। तापर आसीबा स्पोर्ट्स क्वेश्चन आसीबा टिके हमें। इंडिया डिफेटेड ऑस्ट्रेलिया टू विन द सुल्तान ऑफ जोहर कप 2022 हॉकी टूर्नामेंट। द फाइनल मैच वाज हेल्ड इन व्हिच कंट्री? देखंतु इंडिया कोन करिछि ऑस्ट्रेलिया को हरैछि जोहर कप रे, सुल्तान ऑफ जोहर कप रे हॉकी रे। एटा को जाइथिला मलेशिया रे हितला रो फाइनल दा। व्हिच इंडियन पेयर हैज ऑन द फ्रेंच ओपन मेंस डबल टाइटल इन बैडमिंटन? हेउचंती के स्वास्तिक सिराज, रानी रेड्डी आउ चिराग सेठी। से मेनली फ्रेंच ओपन मेंस डबल्स टाइटल बैडमिंटन जीति मन रखु। हु हैज ऑन द फीफा अंडर 17 वोमेन्स वर्ल्ड कप 2022 टाइटल्स? स्पेन। मन रखु फीफा अंडर 17 वोमेन्स वर्ल्ड कप 2022 टाइटल्स। और फीफा तो मेनली मेन जीति आम अर्जेंटीना ना, मन रखिए। Which Formula 1 racing driver on the 2022 Mexican Formula 1 Grand Prix in October 2022 सब जो मार्क्स भेस्टापेन, मन रखो मार्क्स भेस्टापेन जे कि जीति गोटे रेसिंग ड्राइवर आउ ये मेक्सिकन फॉर्मूला 1 ग्रांड प्रिक्स जीति। इंडिया रिसेंटली ऑन द सुल्तान ऑफ जोहर कप 2022 बाय डिफीटिंग ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया को ये हरे कि सुल्तान जोहर कप इंडिया जीति। Which Indian player has achieved the top rank in the recently released ICC T20 World Ranking? से सूर्य कुमार यादव जे कि ICC T20 World Ranking एक नंबर अछंती हला। Who among the following players has become the first player to take hat-trick in history? Who among the following players has become the first player to take a hat-trick in history? मैं कहूँ के से विराट कोहली। विराट कोहली has become the first player to take an hat-trick in history. He again scored in unbeaten 82 against Pakistan, and then later he scored an unbeaten 62 against the Netherlands. Kohli is the first player in the history of the T20 World Cup to score 3 or more half century in the 3 occasions. Which of the following Indian cricketer has become the first Indian player to score 1000 T20 international runs in a calendar year? से सूर्य कुमार यादव जे कि गोटे वर्ष रे माने गोटे कैलेंडर ईयर रे 1000 रन करिसंती सूर्य कुमार यादव। इंडिया बैट्समैन सूर्य कुमार यादव हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन प्लेयर टू स्कोर 1000 T20 international runs in a calendar year. He achieved this feat in the match against Zimbabwe in the T20 World Cup. Who has won the ICC Men's Player of the Month award for October 2022? से विराट कोहली। अक्टोबर 2022 पाई ना आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड का दिया जाइथिला? विराट कोहली को दिया जाइथिला। प्रमोद भगत ऑन द गोल्ड मेडल एट द मेंस सिंगल्स बीडब्ल्यूएफ पारा बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप इन टोक्यो बाय डिफीटिंग डेक्स। कहा को रे कि प्रमोद भगत जे कि गोल्ड मेडल जीति पारा बैडमिंटन। ये होचंती नीतीश कुमार। In boxing, who won his sixth Asian Championship medal in November 2022? Boxing रे निम्नलिखित मध्य किए जे कि 6th Asian Championship medal पाई छथि से मीराबाई चानू। मीराबाई ना भूल कहली। Next question in boxing, who won his 6th Asian Championship medal in November 2022? से होचंती शिव थापा जे कि षष्ठ थर पर एशियन चैंपियनशिप मेडल पाई जीति। नेक्स्ट द सेकेंड एडिशन ऑफ द नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक गेम्स विल बी हेल्ड इन व्हिच स्टेट फ्रॉम 10 to 16 November 2022? ये मेघालय रे होता जोटा कि नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक गेम्स 10 ରୁ 16 नवंबर होता है। Which pair has become the first Indian mixed doubles pair to break into the top
5 of the ITTF table tennis world ranking in November 2022. Question पचरा बोझे question which pair has become the first Indian mixed double pair to break into the top 5 of the ITTF table tennis world ranking in November 2022. से होचंदी गोटे होची मानिका बात्रा आ गोटे होची साथियान. The 15th Asian Airgun Championship 2022 began on November 9, 2022 in Daegu, Dex. ये जो 15तम एशियन एयरगन चैंपियनशिप जोटा कि कोठी हेतिला एटा हेतिला साउथ कोरिया रे म रखंतु. India will host the Women's World Boxing Championship in New Delhi in 2023. The 2022 championship was held in which country? देखंतु Women's World Boxing Championship जोटा कि भारत रे हबो 2023 मसिया रे किंतु 2022 रे कोठी हेतिला एटा तुर्की रे हेतिला. Which of the following state will host the 2022 Khelo India University Games? एटा होची यूपी माने होस्ट करिवो म रखंतु यूपी होस्ट करिवो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम. Next question, who has won the gold medal in the Asian Boxing Championship in the 75 kilo category women's category on 11 November 2022? निम्नलिखित मध्यरु किए जे कि गोल्ड मेडल पाई छंती एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप रे 75 किलो कैटेगरी रे 11 नवंबर 2022 रे से होचंती लोबिना ब्रोगोहेन. Which country will host the 2025 कबड्डी वर्ल्ड कप? एटा होची कि यूनाइटेड किंगडम माने जे कि 2025 रे कबड्डी वर्ल्ड कप होस्ट करिवो. Okay. The International Cricket Council has announced that which country will host the 2024 Under-19 Men's T20 World Cup? एटा श्रीलंका होस्ट करिवो म रखंतु 2024 Under-19 Men's T20 World Cup किए होस्ट करिवो श्रीलंका होस्ट करिवो. Who has won the women's 10th meter air rifle gold medal at the Asian Air Gun Championship in Daegu, South Korea on 12 November 2022? एटा होची 10 मीटर एयर रिफल के गोल्ड मेडल पाई छन ताको ना होची मेहुली घोष. मेहुली घोष. ओके. इंडियन शूटर मेहुली घोष defeated South Korea's Yang Chu to win the women's 10 meter air rifle gold medal at the Asian Air Gun Championship in Daegu, South Korea. Who is the owner of ICC Men's T20 World Cup 2022? ये होची इंग्लैंड. Okay, England defeated Pakistan by 5 wickets to win the ICC Men's T20 World Cup 2022. With their second T20 World Cup titles, England have become the world championship on ODI and T20 at the same time. माने ये ODI भी जीतिला और T20 भी जीतिला. Okay, और 50 ओवर 2019 में 50 ओवर भी ये जीतिला. Okay. How many athletes have been selected as the member of the Indian Olympic Association Athletes Commission? How many athletes have been selected as the member of the Indian Olympic Association IOA? 10टा मन रखंतु मेरी कॉम पीवी सिंधु मीराबाई चानू गगन नारंग are the 10th eminent sports person selected the member of the Indian Olympic Association Athletic Commission. Next question, the 2022 FIFA World Cup is scheduled to begin in November 20 in Qatar. The World Cup obviously. Which country won the final of the 2018 edition of in Russia? 18 रे के जीतिला देखो 2022 रे जीतिला कि अर्जेंटीना जीतिला अर्जेंटीना आउ एथरे जीतिला फ्रांस जीतिला म रखंतु. Okay. Which country has won the Billie Jean King Cup 2022 for the first time by defeating 7-time championship Australia, Glasgow, Scotland, November 2022? Which country has won the Billie Jean King Cup 2022? Switzerland जीती Switzerland. Who has won the gold medal in the men's 10th meter air pistol event at the Asian Air Gun Championship in South Korea in November 2022? So Sip Norwal. Okay. जे कि गोल्ड मेडल पाई मेंस 10th मीटर एयर पिस्टल रे कोठी एशियन एयरगन चैंपियनशिप साउथ कोरिया जो हिथिला नवंबर मास रे. Who has won the Brazilian Grand Prix in Sao Paulo? Brazilian Grand Prix के जीति चंदी से होचंदी जॉर्ज रोसेल. Which state has become the overall team champion of the North East Olympic Games 2022? से होचंदी मणिपुर. मणिपुर has become the overall team champion of the North East Olympic Game 2022. आउ 240 मेडल एथरे से पाइची म रखंदु. एथरे 88 टा गोल्ड मेडल अछि, 75 टा सिल्वर अछि आउ 77 टा माने ब्रोंज मेडल अछि. आउ आसाम फिनिश करिछि सेकंड नंबर 203 मेडल रे. ओके. आउ एटा म रखंदु एटा होछि
नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक गेम्स. Okay. Next question पचाची Carlos Alcaraz become the youngest world number 1 ATP player. He belongs to which country? Association of Tennis Professionals. मन रखो ATP माने कौन? Association of Tennis Professionals. ଆଉ youngest world number 1 ATP player जे कि बनिछंती कार्लोस अल्काराज से केउ देश को बिलोंग करନ୍ତି ସେମାନେ स्पेन को बिलोंग करନ୍ତି ए मात्र तांको होची वर्तमान he will be on his year 214 days on December 5 तांको 19 वर्ष 214 दिन होची. Who was top in the ICC men's T20 batting ranking released on November 2022? सूर्य कुमार यादव जे कि फास्ट स्पोर्ट एक्वायर करिसंती. Which Formula 1 racing driver retired from Formula 1 racing competition in November? से होचंती सेबास्टियन भेटेल जे कि गोटे रेसिंग ड्राइवर से Formula 1 रेसिंग रो रिटायरमेंट नै छंती. Which Indian cricketer has become the first player to score 5 consecutive century in the Vijay Hazare Trophy on November? से होची एन जगदीशन जे कि विजय हजारे ट्रॉफी रे 5टा consecutive century मारी छंती हला एन जगदीशन. And Jagadish broke the world record and became the first player to score 5 consecutive centuries, the first record made by an Indian. Okay. Who is the first Indian table tennis player to win a medal at the ITTF I2 Asian Cup? Answer होची मानिका बत्रा. First Indian table tennis player win a medal at the ITF I2 Asian Cup. How many gold medal has India won the 15th Asian Championship in South Korea? 25टा मेडल पाइछि इंडिया मोर रखंतु 25टा मेडल. हाउ मेनी गोल्ड मेडल हैज इंडिया ऑन द 15th एशियन चैंपियनशिप. नेक्स्ट आसीबा में साइंस और टेक्नोलॉजी क्वेश्चन को आसीबा. देखि व्हिच कंट्री हैज लॉन्च द लैब मॉड्यूल मैंगसियन फॉर इट्स स्पेस स्टेशन? एरा चाइना. ओके ओडे मैंगसियन लैब मॉड्यूल लॉन्च करिछि मैंगसियन चाइना लॉन्च करिछि. China has launched the third and final module Magellan to complete its permanent space station. Who has launched the flood hub platform that will showcase when and where floods can occur? माने को समय बन्या हबो केबे बन्या हबो सेटा मेली गुडे गूगल जारी करिछि. गूगल फ्लड हब प्लेटफॉर्म जारी करिछि गूगल्स. Which aerospace company will launch India first privately developed rocket? एटा होछि स्काईरूट एरोस्पेस. Which aerospace company will launch India first privately developed rocket? ए होछि स्काईरूट एरोस्पेस. What is the name of India first respiratory for life science data? What is the name of India first respiratory for life science data? इटा होछि ताना होछि Indian Biological Data Center. What is the name of India first privately developed rocket? इटा होछि Vikram X. India first privately developed rocket named Vikram X is ready for launch on a sub-orbital mission with 3 payloads. Hyderabad based space startup Skyroot Aerospace will become the first private space company of India launch rockets into space. This mission called Arham will carry a payload of 2 Indian on foreign customer. Okay, जे कि 2टा इंडियन और गोटे फॉरेन कस्टमर को नेकी जाई परिबो. NASA has launched its moon mission on November 16. What its name? NASA has launched its moon mission on November 16. What its name? एर ना होछि Artemis 1. Okay. Which Union Minister inaugurated the Entrepreneurship Cell and Center of Innovation COI at Delhi campus on 23 November 2022? अश्विनी वैष्णव जे कि इनॉग्रेट करिसंती एंटरप्रेन्योरशिप सेल एंड सेंटर ऑफ इनोवेशन. फॉर्मर मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ टाटा स्टील एंड कॉल्ड इंडिया स्टील मेंस डेक्स पास्ट अवे. ताको ना होची जामशेद जे ईरानी. ओके आ फॉर्मर टाटा स्टील एमडी डॉक्टर जामशेद जे ईरानी हैज पास्ट अवे इन जामशेदपुर एट द एज ऑफ 86. He was known as the Steel Man of India. ताको Steel Man of India मध्ये कह जाउथिला. He was associated with the Tata Steel for 43 years. 23 वर्ष टाटा स्टील से जड़ित थिले से. ताको पद्म भूषण अवार्ड मध्ये मिलिथिला 2007 मसिया रे. India first voter श्याम शरण नेगी passed away on November 5, 2022. He belongs to which state? ए जो इंडिया रे प्रथम वोटर श्याम शरण नेगी
जहाँकर देहांत हो हिमाचल प्रदेश थे मन रखु आउ इंडिया फास्ट भोटर श्याम सुंदर नेगी पास्ट आवे ऑन सैटरडे आउ हिमाचल प्रदेश थे ही वाज 106 ईयर ओल्ड से 106 वर्ष तक होता 1952 मसीह जो होता जनरल इलेक्शन से फास्ट भोट देते ओके फॉर्मर इंडियन फुटबॉल कैप्टन हु पास्ट अवे 20 नवंबर 2022 फॉर्मर फुटबॉल कैप्टन नाम हूँ बाबूमणि who was India first dog to be deployed to track predators passed away in November 2022 जोरबा जोरबा जो प्रथम डग थिला जाकू ट्रैक प्रेडेटर डिप्लॉय करा जायथिला आउ तांकर ध्यान दे जायछि in October 2022 who has been appointed the chairman of the citizen of India C20 an official engagement group of the G20 G20 ପାଇଁ ଗୋଟେ ऑफिशियल एंगेजमेंट ग्रुप तैयारी करा जाय जाना होछि C20 है ना तार चेयरमैन किए तार चेयरमैन होछि माता अमृता नंदामयी देवी मन रखंतु who has been appointed the IG of rapid action force RAF रो माने IG किए होछिन आनी अब्राहम who was named its next president of the Federation of Indian Chambers and Commerce Industry FICCI who was named its next president by the Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry on November 2 2022 सुब्रकांत पंडा जे कि नेक्स्ट प्रेसिडेंट अबे कार फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री दिस क्वेश्चन हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज अ मेंबर इन द ऑर्डर इन ऑस्ट्रेलिया who among the following has been appointed as the member in the order of Australia Amit Dasgupta okay who has assumed the additional charge of chairman and managing director of BPCL ro chairman managing director के तांगा नाम छि VR Krishna Gupta who has been appointed the chairman of National Monuments Authority से होचंदी के से होचंदी किशोर कुमार बासा who has recently appointed the chairman of the law commission chairman के ऋतुराज Awasthi who was elected the new president of International Hockey Federation in November 2022 Mohammad Tyap Ikram मनको जे कि न्यू प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन FIH रो Justice DY Chandrachud was sworn as the new Chief Justice of India November 9 2022 he was the next Chief Justice of India से होचि 50 तम मनरखंतु DY Chandrachud who has become the first Indian American politician to hold the post of Lieutenant Governor LG of US State Maryland in November से होचंदी अरुणा मिलर मनरखंतु जे कि फर्स्ट इंडियन अमेरिकन ओके पॉलिटिशियन जे कि लिeutenant गवर्नर हेबे US स्टेट मारलैंड रो नेक्स्ट क्वेश्चन पचारि छी स्विट्जरलैंड टूरिज्म हैज अपॉइंटेड हु इट्स फ्रेंडशिप एम्बेसडर टू शोकेस एंड प्रमोट प्लेसेस इन द कंट्री टू इंडियन ट्रैवलर्स से होचंदी नीरज चोपड़ा मनरखंतु जे स्विट्जरलैंड कोन करछि स्विट्जरलैंड टूरिज्म कोन करछि ओडे अपॉइंट करछि फ्रेंडशिप एम्बेसडर जे कि इंडियन ट्रैवलर्स से कोन करे प्रमोट करिवे माने टू शोकेस एंड प्रमोट प्लेसेस इन द कंट्री टू इंडियन ट्रैवलर्स से होचंदी नीरज चोपड़ा who has been appointed the director on the central board of the Reserve Bank of India in November 2022 Vivek Joshi or central government has appointed financial service secretary Vivek Joshi as director on the central board of the Reserve Bank of India RBI okay the board is primarily responsible in inspection of the central bank who has been appointed the full time member of Niti Aayog full time member so Arvind Birmani okay next question who has been appointed as the governor of West Bengal governor के अछंती ताको ना होची सी आनंद बोस West Bengal governor who was elected as a member of the International Committee for Weights and Measures CIPM on 21 November 2022 International Committee for Weights and Measures से होचंती के वेणुगोपाल अचंता okay who has taken over the chief executive officer of Khadi and Village Industry Commission KVIC Vinay Kumar who has been appointed the executive director ED of Bank of Baroda for 3 years होचंदी ललित त्यागी जे कि बैंक ऑफ बड़ौदा रो एक्जीक्यूटिव डायरेक्टर 3 वर्ष पाई
Who has been appointed as the chairman of All India Council for Technical Education AICT? TG सीताराम ओके TG सीताराम जे कि ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन AICT रो चेयरमैन भाବରେ appointed ହେଇଛନ୍ତି। Who has been named the national ambassador for TB Free India campaign? दीपा मलिक जे कि नेशनल एम्बेसडर टीवी फ्री इंडिया कैंपेन रो। नेक्स्ट होची इंपोर्टेंट डेज। नेशनल यूनिटी डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन व्हिच डे टू कमेमोरेट द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ इंडिया फर्स्ट होम मिनिस्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल 31 अक्टोबर नेशनल यूनिटी डे बार मना जाई थाए। Which foundation day of Kerala was celebrated on 1st November 2022? 66th रखंतो जे फाउंडेशन डे केरला रो। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देछि द यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन UGC has directed all higher education institution to observe Indian language day on which day every year? एरा होछि इंडियन लैंग्वेज डे एरा होछि 11 डिसेंबर। ओके which day is observed the world tsunami awareness day? World tsunami awareness day 5 November। ओके वर्ल्ड tsunami awareness day। which day is celebrated national cancer awareness day? national cancer awareness day एटा 7 November। मोर रखिबे आपण on which day the ministry of education has announced celebrate tribal pride day? tribal pride day के मना जाउछि एटा 15 नवंबर मना जायते 15 नवंबर रे। तापर देछि गुरु नानक जयंती के मना जायते एटा मना जायते 8 नवंबर रे। मन गुरु नानक जयंती also known as गुरु पर्व प्रकाश पर्व is being celebrated on November 8 2022। तापर वर्ल्ड साइंस डे के मना जाउछि पीस एंड डेवलपमेंट पई एटा होछि 10 नवंबर मना जाउछि। नेक्स्ट क्वेश्चन पचारिछि पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर एटा को 12 नवंबर मना जाय थाय पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग डे। देछि व्हिच स्टेट हैज सेलिब्रेटेड मिलेट डे ऑन नवंबर 10 2022 टू प्रमोट क्रॉप कल्टीवेशन एंड कंजप्शन एटा होछि ओडिशा। मन रखंतो ओडिशा जे कि मिलेट डे नवंबर 10 रे मनाइथिला। ओके और नवंबर 10 2022 ओडिशा सेलिब्रेटेड वज्र दिवस मिलेट डे टू प्रमोट वज्र कल्टीवेशन एंड इट्स कंजप्शन अक्रॉस द स्टेट। Which edition of National Library Week has been inaugurated in Vijayawada on November 14? 55 पंचम माने 55तम नेशनल लाइब्रेरी वीक जोटा कि होइथिला विजयवाड़ा रे। Which date is observed on the International Day of Tolerance? एटा 16 नवंबर। देछि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स डे के मना जाउछि 17 नवंबर रे 17 नवंबर रे मना जाउछि। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हेन इच वर्ल्ड टॉयलेट डे इज देयर सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? वर्ल्ड टॉयलेट डे के मना जाय थाय 19 नवंबर में मना जाय थाय। वर्ल्ड फिशरीज डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन डेक्स? वर्ल्ड फिशरीज डे 21 नवंबर मना जाय थाय। ओके इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन 25 नवंबर मन रखंतु। व्हिच डे ऑब्जर्व एज द इंटरनेशनल डे फॉर एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन 25 नवंबर। कॉन्स्टिट्यूशन डे ऑफ इंडिया 26 नवंबर ना 1949 मसरे हमर कॉन्स्टिट्यूशन जेटा कि एडॉप्ट करा जायथिला। आउ नेक्स्ट क्वेश्चन पचारिछि इंटरनेशनल इयर्स ऑफ मिलेट्स IYM 2023 इंटरनेशनल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर S जयशंकर अटेंड द प्री लॉन्च सेरेमनी ऑफ इंटरनेशनल मिलेट्स ईयर ऑफ 2023। तापर नेक्स्ट होछि समिट एंड कॉन्फ्रेंस। आउ आज एतिक थाउ आमे समिट कॉन्फ्रेंस अलग क्लास रे कवर करे बहुत लंबा वीडियो होई जिवो।